Okay, so today we are moving towards the energy profile diagram of energetics chapter, which is the second main important part of this. You can say that chapter, energy profile diagram. Energy profile diagram. It can be asked in exam for 3 marks or up to 4 marks. It's very important to understand, or it's very simple. We just need to draw that a few lines, and we got 3 marks in that, right? So actually, we have 2 different types of methods. Number one is exothermic, in which energy is released, and one is endothermic, in which energy is absorbed from the surrounding. We know that. In exothermic reactions, temperature increases. In endothermic reaction, temperature decreases. We know this. All right. The exothermic is actually bond making, and endothermic is bond breaking. We already talked about this. A lot of things we already discussed in the last class, and hopefully you all learn all these properties and the things as statements about that. Right. Today we are moving towards energy profile diagram, and we know that exothermic reaction. If you don't mind, but can I write like this, that the reactants converted into product and release energy. Is that right? Can I write like this? Yes. Yes. Yes, sir. Yes. It means that enthalpy change is over there, which is the energy difference, and the energy is releasing, which is in the product. Definitely. अब घर में हम अगर for suppose बिरयानी बना रही हैं अम्मा, तो उनका हरगिज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना और वाटर प्रोड्यूस करना नहीं है. उनका मेन जो मकसद है आग लगाने का चूल्हे के अंदर, वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ना बने, बल्कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो, जिससे वो खाना बना सके. तो इसका मतलब ये हुआ कि actually heat energy which is releasing in the exothermic reactions are actually the main product, right? This is one of the product, right, bacho? Yes, sir. Yes, Same sir. as it is in endothermic reactions, reactants absorb energy and form products, right? So it means the energy which is absorbing in the reaction is one of the reactant, right, bacho? Yes. So here we are going to draw some diagrams for this. This is one axis which is on x-axis, and this is x-axis. In both of them, these are progress of reaction. Progress of reaction का मतलब क्या होता है कि जब आप reactants को start कराते हो reaction कराना, तो पहले reactants होते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता product में convert होते हैं. तो this is progress of reaction. ठीक है भाई? पहले reactant आएगा, फिर product लिखी जाएगी. And here it is y-axis, जिस पे आप डालोगे क्या? Energy. ठीक है? You can see this. This is what progress of reaction. Progress of reaction का मतलब क्या है बच्चों? Progress of reaction का मतलब ये है कि you need to write reactant first and then product. ठीक है ना? पहले reactant लिखेंगे फिर product, और यहाँ पर भी आप लिख सकते हो reaction pathway भी लिख सकते हो आप. इसको जरूरी नहीं है कि आप progress of reaction लिखो, दोनों में से कोई सा भी लफ्ज यूज कर सकते हो. reaction pathway अगर आपको आसान लगता है तो आप ये यूज कर सकते हो. In exam they can even ask to label the axis as well. It's very important to understand. You need to keep remember कि वो exam में आपसे कह सकता है कि बच्चों label करो axis को, तो it would be for 1 mark. You need to keep remember. And then on y-axis it would be energy. On y-axis it would be energy. It would be energy. Right. So I told you बच्चों कि पहले आपने क्या लिखना है? reactant. So ये वाली अगर मैं इसको imaginary मैं इसको break down कर दूं नीचे वाले पाथ को 2 हिस्सों में, तो यहाँ पहले आप क्या लिखोगे बच्चों? reactants, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप? product. राइट बच्चों? Yes, sir. तो ये इमेजिनरी लाइन आप समझ लें कि बीच में ड्रॉ हो गई है. ठीक है? सो बच्चों, just look at over here in the first reaction, exothermic reaction. Just look at over there. Just apply the simple mass over here. Which one is greater, reactant or product? Product. Reactant is capital because reactant is actually the sum of 2, right? So it means reactant is having a greater energy over there. Is that right, Butch, or not? Yes, sir. Yes. Right. So but you just need to keep remember that you need to draw the reactant a little bit higher than products. That's it, right? So over here you need to write reactants. Whatever the equation you have, you can write the reactants of that equation, and you need to write the product over here. Whatever the equation you have, you just need to write the product of that equation into this compartment. Right, Bacho? Any problem? No problem, sir. No, sir. Okay, so can I connect these two like this? Any problem? No, sir. No, sir. Okay, this is same all the time. You need to draw like this if the reaction is exothermic.
And we know that, how do we know that the reaction is exothermic? Even in the equation, if they gave us the energy in negative, so we can identify कि भाई ये exothermic reaction होगा. और जैसे ही आपने identify कर लिया कि भाई delta H negative है, यानी कि वो इशारा कर रहा है कि जो reaction है वो exothermic है, तो इसकी energy profile diagram ऐसी ही बनेगी. अब मर्जी है आपकी, मैंने 2 लाइंस के अंदर इसको 2 लाइंस छोटा किया, आप 4 लाइन छोटा कर दो, आई डोंट केयर. एग्जामिनर डोंट केयर, बस उसको ये पता है कि भाई प्रोडक्ट की एनर्जी कम है. वी डोंट नीड टू लेबल द एक्सिस कि भाई कितनी कम है या कितनी ज्यादा है, बस कम है, वी नो दैट, राइट? Right, Right, बच्चों? sir. Yes. Same as it is in this part, you can do this, that product is the sum of these two, so product should be upper over here, right? So whatever the product you have in the equation, you can label over here, and what is the reactant of the reaction, you can write over here the reactants, right? And then we connect these two like this, right, बच्चों? Yes, sir. Any Yes, problem sir. to one of you? No, sir. चलें, अब मेरी बात गौर से सुनिए. अब आपके पास यहाँ पर लेबल No, करने sir. के लिए चीजें मौजूद हैं. The one is enthalpy change. We know that. What is enthalpy change? Enthalpy change is the energy difference. Enthalpy change हमने last class में काफी सारे निकाले हैं. Enthalpy change क्या होता है? This is energy difference. बच्चों, energy difference किसका था वो? Energy difference of? Reactants and products. Reactant to product. तो आपको याद होगा कि आपने क्या किया था? Reactant minus product किया था, right? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पर भी आपने सिर्फ उसको डिफाइन करना है कि where is enthalpy change. You can say that this is the energy of reactants, right? This is the energy of products. So ये जो distance है, this is actually what? Enthalpy change, right? Same as it is, आपके पास ये जो reactant और product का distance है, this is actually what? Enthalpy change. Any problem, बच्चों? No, sir. One thing that you need to keep remember over here, that the head of the arrow should be towards head of the arrow should towards product, बस ये चीज आपने यहाँ याद रखनी है और कुछ भी याद नहीं करना. तो product ऊपर है, the head of the arrow should be upward, product नीचे है, the head of the arrow should be downward. That's it. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Any problem to any one of you? No, sir. No, sir. एक और चीज है हमारे पास जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. एक और चीज हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. बच्चों, एनी वन ऑफ यू, डू यू नो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी? Sir, energy required to start any reaction. यस, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है आपके पास? एक्टिवेशन एनर्जी इज एक्चुअली द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. यू कैन से दैट द मिनिमम, वो कम से कम एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको देना पड़ रही है. So the minimum amount of energy which is required to start any reaction. For suppose अगर आप घर में अपने मीथेन गैस को बर्न करना चाहते हैं, तो for this you need to provide the matchstick to them, right? अभी उसको matchstick provide करोगे तो वो minimum amount of energy है जो कि आप दे रहे हो उसको, जब वो जल जाता है तो फिर वो start हो जाता है continuous reaction, right? Yes, sir. So the minimum amount of energy required to start any reaction. You can say that minimum amount of energy required to start any reaction. अच्छा, जरा मुझे बताएं बच्चों, रिएक्शन स्टार्ट तो नहीं हुआ ना जब आप इसको प्रोवाइड कर रहे हैं एनर्जी? रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, राइट बच्चों? इसका मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, आप एनर्जी किसको प्रोवाइड कर रहे होगे? Reactant. Yes, बस ये आपने याद रखना है. तो आपने याद रखना है कि what is activation energy in the graph? It is always reactant से highest peak. This is always reactant से highest peak. You need to keep remember this is always reactant से highest peak. तो ये जो reactant है इसकी एनर्जी से आपने इसको एनर्जी देना शुरू की till वहां तक जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो गया. So this is what activation energy of the reaction, right बच्चों? Yes. Yes, sir. This is all the time positive. This is positive all the time. You are providing energy to start the reaction. This is the energy which is provided by you. So it is always positive. This is always positive. ये हमेशा हमेशा positive रहेगी, and the head is always upward. Head of arrow should always upward. ये हमेशा ऊपर की तरफ होगा. So it shows कि ये positive है. जब भी head ऊपर होता है तो ये show करता है कि भाई ये positive है, और जब head नीचे होता है तो ये show करता है ये negative. नहीं.
बेटे आप में से किसी का माइक ऑन है? शुएब, यार आप लोग माइक बंद कर लिया करो। देखो बाकी सब भी माइक बंद करके बैठे हैं, तो आपको भी माइक बंद करना चाहिए, डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, चले खैर। आपके पास आपको याद रखना है एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड द हेड इज ऑलवेज अपवर्ड, क्योंकि ये वो एनर्जी है जो कि आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है ना। और जो एंथैल्पी चेंज होगा, अगर हेड ऊपर है तो इट मींस कि वो शो कर रहा है कि पॉजिटिव, एंड यू कैन सी दैट दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। हेड ऊपर है, पॉजिटिव एंथैल्पी है, और आपके पास हेड नीचे तो नेगेटिव। लिखने की जरूरत नहीं है डायग्राम में, हम इसको मिटा सकते हैं, हम इसको लिखे नहीं तो ज्यादा बेहतर है। अब बस आपने डेल्टा एच शो करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? यहाँ पर हाईएस्ट पीक ये है, दिस इज द हाईएस्ट पीक एंड दिस इज द रिएक्टेंट, सो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन, राइट बच्चों? एनी प्रॉब्लम? No, sir. Any problem, bacho? Yes, that's fine. No, sir. Then one more thing that you need to see over here in this diagram, that if you remember बच्चों कि catalyst भी हम लोग use करते हैं, है ना। catalyst क्या करता है बच्चों? We know that we have one thing to know about catalyst is catalyst speeds up the reaction. catalyst क्या करते हैं बच्चों? catalyst speeds up the reaction. catalyst क्या कर देते हैं? ये reaction को क्या कर देते हैं? speed up कर देते हैं। and how they do this, वो कैसे करते हैं? ये किस तरह करते हैं भाई? वो इस तरह करते हैं by lowering the activation energy. वो activation energy को क्या कर देते हैं? लो कर देते हैं by lowering the activation energy. तो देखो अगर फॉर सपोज इस रिएक्शन को मैं देखूं, यहाँ पर फॉर सपोज लिखा हुआ है, ये जो रिएक्टेंट है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, 100 एनर्जी है रिएक्टेंट की। और ये जो फाइनल प्रोडक्ट जहां तक हमने इसको फाइनल हाइट जहां तक हमने इसको हीट किया, फॉर सपोज ये है 500 है। So you can see this कि अगर मुझे भाई रिएक्शन को स्टार्ट कराना है तो एटलीस्ट मुझे 400 फर्दर एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, तब जाके ये रिएक्शन होगा। ऐसी है। Yes, जी, sir. sir. तो अब मैं Yes, sir. कैटलिस्ट ऐड करूंगा, तो कैटलिस्ट ऐड करने से क्या हो जाता है? ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये कम हो जाती है और ये रिएक्शन थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाता है। यू कैन सी दिस नाउ, दिस टाइम दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। अब फॉर सपोज ये 500 पे स्टार्ट होता, अभी ये 300 पे स्टार्ट हो गया, तो यू कैन सी दिस कि आपकी एनर्जी भी कम लगी, आपकी कॉस्ट भी कम लगेगी डेफिनेटली फिर, और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। वो जो टाइम जो 300 से लेकर 500 तक एनर्जी को राइज करने में लगता, वो टाइम भी आपका सेव हो जाएगा। तो कैटलिस्ट हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, हमारे पैसे बच जाए, हमारी एनर्जी बच जाए। So you can see this is blue one is activation energy, but this is for catalyzed reaction. This is for catalyzed reaction, and same as it is for the endothermic. If you use that in the endothermic reaction, so they decrease the activation energy and the reaction become faster. So this is what activation energy of catalyzed reaction. ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सर ये वाला So- आप जरा रिपीट कर सकते हैं? Yes, whenever you are using catalyst, so catalyst क्या करते हैं बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं। तो जो भी हाइट आपने बनाई होगी ना, जो भी आपने खुद ही बनाई है ना हाइट, मैंने आपको नहीं बोला आप इतनी ऊंची बनाए, आप इतनी नीचे बनाए, जो भी हाइट आपने बनाई है अपनी डायग्राम में, उससे थोड़ा सा नीचे आप कर्व बना देना। दैट वुड बी द that could be showing you that आपने क्या है? कैटलिस्ट यूज किया। ठीक है, ठीक है बच्चों? Right, sir. और यस आप सर देख समझ सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जब कैटलिस्ट यूज किया बच्चों, मैंने किस चीज को चेंज किया है? खाली I am just changing the activation energy. So you need to remember this, that it only changed the activation energy. It only decreased the activation energy, but no effect on enthalpy change. But no effect on enthalpy change. ये याद रखिएगा भैया, एमसीक्यूज बड़ा आता है पेपर में, तो आपने याद रखना है कि आप जो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर रहे हैं, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कम करेगा खाली, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा बच्चों किसके ऊपर? एंथैल्पी चेंज के ऊपर। एंथैल्पी चेंज रिमेन सेम, वो उतना ही जितना एनर्जी पहले रिलीज कर रहा था या एब्जॉर्ब कर रहा था, अभी भी उतना ही करेगा, एब्जॉर्ब या रिलीज। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एंथैल्पी चेंज। गॉट इट एवरी वन ऑफ यू? Yes. Yes, sir. चलिए इसको प्रॉपर्ली अपने पास नोट डाउन कर लें। कोई भी चीज है, कोई भी सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। What are some examples for this, right? So if you talk about like the conversion, first of all, so we know that solid can be converted into liquid, and we know that this is what? This is melting. This is what? Melting. How an ice can melt? Ice can melt when it is absorb energy from the surrounding. So this is absorption of energy from the surrounding. So it can be endothermic reaction. And if you talk about the backward of this, which is freezing, this is then exothermic reaction.
Same as it is, if you convert liquids into gaseous state, which is vaporization or evaporation, or you can say that boiling, so they all are endothermic reaction. And the backward of them, which are condensation reactions, are known as exothermic reactions, right? Same as it is, solid to gaseous will be solidification, which is absorbing energy and converting into gaseous state. Sublimation, this is sublimation. हम ये एरो काट देते हैं. This is solidification. ठीक है. और इसका जो backward वाला है ये वाला, this is sublimation. So the sublimation is endothermic and the solidification is exothermic, right बच्चों? Right, sir. So these are the examples that you need to keep remember, and also you need to keep remember that we have some more examples of exo and endo that you need to keep remember. Exo is also neutralization reactions. Whenever you react acid with base, it would be neutralization reaction take place. So it would be exo. And dilution, if you are adding acid to the water, it is also exothermic reaction. If you talk about combustions, the burning of substances, so it is also exothermic, right? So these are exothermic reactions that you need to keep remember. Then here we have an endothermic reactions. We already mentioned some of them over there. And then thermal decomposition. You need to keep remember thermal decomposition is endothermic reaction. Then you need to keep remember photosynthesis is a very common example of endothermic reaction. Thermal decomposition, उसके अलावा भी आपके पास electrolysis है, which is endothermic reaction. और इसके अंदर आप respiration को भी consider कर सकते हो, which is exothermic reaction. अच्छा, thermal decomposition में आप लाजमी cracking को याद रखिएगा. Cracking is one of the thermal decomposition process, which is right now we have endothermic reactions. Is that clear, every one of you? Yes, sir. Yes, sir. Examples that you need to keep remember. And I have one more question for you. और वो question mole से related हो सकता है, तो वो भी हम देख लेते हैं. वो सवाल आपके पेपर में अक्सर बेशतर आता है. This is energy changes. Here we have some questions जो कि अभी हमें करने हैं, ठीक है ना? पहले हम वाला questions कर लें, उसके बाद फिर हम करते हैं. देखें, here we have question. Yes, it is. Just look at over here. For suppose they are saying methane reacts with water to produce hydrogen and carbon monoxide, right? And they are showing you that this reaction is actually producing 210 kilojoules per mole energy, right? They are saying calculate the energy absorbed by the reaction when 560 grams of carbon monoxide is formed. Just look at over there. When 1 mole of carbon monoxide is producing, they are saying that you will have 210 energy release. Sorry, absorbed, right? And then they are saying that if you have 560 grams of carbon monoxide, so what happens? So it's very simple. We know that first of all, we need to find out moles. So moles can be find out if you have mass, you can divide it by MR, you can get number of moles. Right now we have 560 grams carbon monoxide, and the MR of carbon monoxide is 12 plus 16 will give you 28. So it would be 28. So it would give you 21, 22, and it will be 20 moles. All right, bacho? Right, Yes. sir. Say that if 1 mole is producing 210 kilojoules energy or absorbing 210 kilojoule energy, the 20 moles absorb X. This will over here, this will over here. The answer would be 210 into 20. It would give you what? 4200 kilojoules energy. It absorbed this amount of energy. Right, bacho? Yes, sir. Same as it is the second question of this page. Carbon reacts with steam in a reversible reaction when 1 mole of hydrogen is formed, 131 kilojoules energy is absorbed. Calculate the amount of energy absorbed when 240 decimeter cube of hydrogen is formed, right? So you know that first of all we need to find out moles. So बच्चों moles कैसे निकालते हैं? If you have the volume of any gas in decimeter cube, you can divide it by 24. So you can get what number of moles? So it is 240 divided by 24 would give you 10 moles. And we know that if 1 mole is producing or absorbing 131 kilojoules energy, so the 10 moles would be 131
closed loop energy. Is that right, every one of you? Right, sir. Yes, sir. Okay, so these are the questions that you need to know about this chapter. I am just going to show you some questions. और वो पहले आपने solve करने हैं, उसके बाद फिर मैं आपको solve कराता हूँ. ठीक है, started. So बच्चों, if you talk about question number 1, they are saying the combustion of butane is an exothermic reaction. Explain in terms of bond making and bond breaking. You need to see this. It's very important. If you are not explaining your answer in this term, then you won't get marks for this, right? You need to remember, you need to say that bond making is exothermic. Bond making is exothermic, while bond breaking is endothermic. ये तो आपने लाजमी लिखना है. ये बात आप लिखेंगे तो you will get 1 mark for this. ये लाजमी लिखनी है आपने बात. अब दूसरी लाइन में आपने conclude करना है अपना आंसर कि why this is exothermic. We know that bond making is exothermic, so ये ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा होगा as compared to bond breaking. तो बस वही लिखना है आपने. आपने second point ना, आपने क्या लिखना है? Energy release after bond making is greater than energy absorbed for bond breaking. Right, बच्चों? ये इस तरह आपने 2 statement लिखनी है, तो you will get 2 marks for this. Got it, every one of you? Yes, sir. And again, this is the first statement, which is all the time you need to write. Even they are asking for exo or endo, we don't care about that. आपने लिखनी है ये हमेशा, ठीक है ना? तो ये वाली तो आपने as it is लिखनी है. दूसरी वाली चेंज करनी है आपने. बस यहाँ पर क्या चेंज करनी है आपने? एनर्जी एब्जॉर्ब. आपने यहाँ क्या लिखनी है? एनर्जी एब्जॉर्ब फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग. एनर्जी एब्जॉर्ब फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग इज ग्रेटर. अब वो क्या हो गई? ग्रेटर हो गई. ग्रेटर देन energy release after bond making. Right, बच्चों? बस आपने ये अपना स्टेटमेंट चेंज करना है और पहली वाली स्टेटमेंट सेम रखनी है. Got it, every one of you? Yes, sir. Then आप देख सकते हैं कि ये 3 चीजें पूछ रहा है आपसे. ये 3 चीजें आपने बनानी है. You will get 3 marks for this. And we know that this is photosynthesis, which is endothermic reaction. So there is a clue for us. So this is product. You can even write product over here क्योंकि उसने reactant लिखा था, आप भी product लिख दो. ठीक है. उसके बाद आपने इसको join कर दिया इस तरह से. ठीक है. And the difference between reactant and product is actually enthalpy change. 2nd mark for this. And the distance between highest peak to reactant is activation energy. ठीक है भाई? Yes, sir. So आपको 1 mark मिलेगा किसका? Product का. 1 mark enthalpy change का. 1 mark activation energy का. Then over here again you can see this. There is a clue for us that there is negative enthalpy change, so it's just showing that the reaction is exothermic. So reactant product का 1 marks. Reactant ऊपर होगा, product नीचे होगी. ये बन गया आपके पास 1 mark. ठीक है ना? You can even write reactants over here. आप यहाँ reactants लिख सकते हो. यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? Carbon plus oxygen gives you carbon dioxide. You can even write like this. ठीक है. And then enthalpy change आपको दिखाना है. So this is enthalpy change. आप इसको dotted line करके दिखा दो वही ऐसे. And this is the activation energy. Right, बच्चों? So इस तरह आपको 3 marks मिल जाएंगे. ठीक है बच्चों? Yes. Then इस बात क्या आप इसमें भी यही करना है. आपने जस्ट आपने कंबाइन करना है. उसके बाद वो कह रहा है draw a label pathway for uncatalyzed reaction. This is uncatalyzed reaction. And draw a label pathway for catalyzed reaction. So आपने इसी के अंदर जो है catalyzed भी दिखा देना है a little bit light like this. ठीक है भाई? So this is catalyzed and this is uncatalyzed. Got it, बच्चों? Yes. You can Yes. write Yes, catalyzed. Right, this is catalyzed and this is uncatalyzed. You need to mark it, right? Got it? Yes, sir. Then over here, they are asking what is exothermic reaction. It's quite simple. I don't need to answer this. You know that the reaction in which energy releases is called exothermic reaction. And in the first one, they are asking, how do you know that the
from graph, how do you know that this reaction is exothermic? तो जब कभी भी वो आपसे इस तरह का सवाल पूछे कि ग्राफ से आपको कैसे पता चला कि this is exothermic reaction, so you can say that the energy of product is lesser than reactant. You can say in this way. ठीक है, तो आप बता सकते हैं energy of product is lesser than reactant. अब देखिए इसमें कुछ भी हमें नहीं करना था, ठीक है ना, इसमें ऑलरेडी उसने ग्राफ दिया हुआ है, वो आपसे पूछ रहा है कि हाउ डू यू नो दैट ये भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसमें आप नहीं लिखोगे कि उसमें एनर्जी रिलीज हुई है या फला फला, आपने ग्राफ से देख के बताना है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से देख के बताना है, तो आप वहां से देख के बता सकते हो कि एनर्जी प्रोडक्ट की कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, इस वजह से ये एक्सोथर्मिक है, सिंपल। दूसरे वाले में आपने डिस्क्राइब कर देना है दैट द रिएक्शन इन व्हिच एनर्जी रिलीज टू द सराउंडिंग इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, and then this is endothermic in which energy is absorbed from the surrounding is called endothermic reaction. And question number 7 they are asking for reactant and product enthalpy change and activation energy, and the reaction is exothermic. There is no clue, they just gave you directly answer कि भाई exothermic है, तो we know that product ऊपर होगा reactant ऊपर होगा, product नीचे होगा, this is reactant, आप यहाँ reactant लिखना चाहो reactant लिख लो, equation वाले लिख लो, and this is enthalpy change and this is activation energy, right बच्चों? Yes. जी सर। Okay, and this 8 and 9 we already have done. 10th अभी हमने पहले ही कर लिया है। 11th, so if we talk about question number 11, so we need to complete this question, and you can see this that they are saying that it releases energy. इसका मतलब ये है कि ये exothermic है, तो it would be like this. इसमें प्रोडक्ट उसमें रिएक्टेंट्स लिखे हुए हैं, तो आप प्रोडक्ट लिख दें यहाँ पर, इट वुड बी वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड इट इज 3 एंड इट इज 2, राइट बच्चों? और दे आर सेइंग दैट आपने ओवरऑल एनर्जी चेंज भी दिखाना है, तो एनर्जी चेंज जो है आपके पास वो एंथैल्पी चेंज ये आ गया, ठीक है, एंड व्हाट इज एक्स? इट इज एक्टिवेशन एनर्जी, राइट बच्चों? Yes. Yes, sir. Right, sir. Yes, sir. बाद ये हम सवाल लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ये आप लोग कर चुके हो, ये आप लोग कर चुके हो, ये भी आपने कर लिया, ये भी कर लिया, और ये 16th आपके पास है यहाँ पर। They are saying the complete energy Sir? profile diagram, label the reactant, product and enthalpy. जी बेटे। सर लास्ट क्लास में आपने चैलेंजिंग क्वेश्चंस का कहा था। हाँ, तो अब मुझे आप याद दिला रहे हैं, चलें ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को उसकी तस्वीर भेज देता हूँ, सही है? ओके सर। तो आप लोग कर लेना। अब ये जो रिएक्शन हमने किया था, ये पूरा रिएक्शन अब ये एक्सोथर्मिक था या एंडोथर्मिक था? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, इसका डेल्टा एच जो है नेगेटिव में आया था, तो हम इसको बना देंगे इस तरह से, तो दिस इज रिएक्टेंट, नहीं ये तो क्वेश्चन ही डिफरेंट है, सॉरी, उसमें लिखा हुआ उन्होंने द फास्फोरस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस फॉस्फाइन, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, दे टोल्ड अस द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, तो ये रिएक्टेंट आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया, इट वुड बी लाइक दिस, तो P प्लस हाइड्रोजन एंड देन फॉस्फाइन, राइट, और ये आपके पास क्या कह रहा है, आपने एंथैल्पी चेंज भी बताना है, तो दिस इज एंथैल्पी चेंज, राइट बच्चों? Right, sir. In the last one they are saying that explain in terms of bond Yes, sir. making and why this is endothermic reaction, because the energy released is greater,